record on. Okay. So the chapter that we are taking now, the chapter that we are taking now is haloalkanes and haloarenes. Okay. And you know now we have to follow NCRT. Yes. We have to follow NCRT for our NEET exams. So the chapter is haloalkanes and haloarenes. And how do we start the chapter? We start the chapter by saying that suppose if you are given methane, so you know methane is CH4, right? Yeah. Okay. So now what are we going to do is in this methane, okay, in the first case, we are going to substitute one of the hydrogen atoms by a halogen atom. One of the hydrogen atoms will be substituted by a halogen atom out over here. Okay. So when you do this, the structure that you are going to get is CH3 because out of four hydrogen atoms, one has been substituted, so three Hmm. are remaining. Got it? Now you are substituting this hydrogen atom by a halogen atom. Now in organic as well as in inorganic chemistry, we represent the halogen atom as X. So the group is going to look like CH3X. Got it? Now Okay. what are we going to do in the second case? In the second case, we are going to substitute two hydrogen atoms by two halogen atoms. So it is going to form CH2X2 because you are substituting two hydrogen atoms by two halogen atoms. Getting it, madam? Yeah. In the third case, what will you do? You will substitute three hydrogen atoms by three halogen atoms. So the formula that you will get is CHX3. Yeah. And in the fourth case, you are going to get CX4. So what I want to make you understand is whether this is CH3X or C2, CH2X2 or CHX3 or CX4. All the four compounds are basically called as halogen derivatives. So suppose if I ask you what are halogen derivatives, then tell them, कि sir, halogen derivatives are first of all organic compounds. Now, what do you understand by the word organic? Organic means the carbon will be the principal element. Okay. Hmm. Then the second thing that you will say is that, कि sir, these compounds are obtained by substituting one or more than one hydrogen atom of a hydrocarbon by one or more halogen atom. Now, what do you mean by hydrocarbon? Do you know this, madam? Yeah. Substances which have only carbon and hydrogen. Only carbon and only hydrogen. So the methane that I had taken had only Yeah, carbon and only hydrocarbon. hydrogen. So it's a hydrocarbon. So halogen derivatives are derivatives of hydrocarbons where one or more than one hydrogen atoms are substituted by one or more than one halogen atoms. Got it, madam? Yeah, these are called halogen derivatives, right? Superb. Yes, they are called halogen derivatives. Whether this is compound 1, whether you take this compound 1, whether you take this compound 2 and 3 and 4, which I have not drawn on the screen, they all are halogen derivatives. Got it? Hmm. Okay. Yes. Now, the next thing that we study in an organic chapter is the classification. See, there is a pattern of studying organic chemistry. The first thing that we always study in an organic chemistry is the definition of the compound, which we did right now. The second thing that we study is the classification of the compound. The third is the nomenclature. Fourth is isomerism. Fifth is methods of preparation, like how the compounds are prepared, what conditions, what reaction, what catalyst. The Yeah. sixth is physical and chemical properties. In physical properties, we'll study color, taste, odor, melting point, boiling point, solubility, dipole moment, and then chemical properties may reactions, and the last are the uses of organic compounds, like I suppose you are going in a medical field, right? Yeah. So this halogen derivatives are used in anesthetics. You understand by the word Yes. anesthetics, है ना? Yes. So you know this. So we have to do the uses also. Okay, so let's do the classification, which is the second part of the chapter. So in classification, let's try to understand what are the different classifications that are available for halogen derivatives. Okay. So now you tell me the one which I will highlight again with a blue color. You tell me how many hydrogen atoms were substituted by halogen atoms out over here, madam? One.
1. So those organic compounds, those halogen derivatives, where only one hydrogen atom of a hydrocarbon is substituted by one halogen atom, such halogen derivatives are popularly called as monohalogen derivatives. They are called as monohalogen derivatives. So, mono Monohalogen. means single. You have single halogen. So when you have only one halogen atom, you can proudly say that it is an example of a monohalogen derivative. Is this clear, madam? Yeah. It's a monohalogen derivative. Mono means single. Now this monohalogen is further classified into a lot of other types. Like they are classified into, I will give you the names, but first I will give you the examples. Like for example, they give you something like this, CH3X. Now, in organic chemistry, we say that this halogen is the functional group, right? This is the functional. Yeah. The carbon atom that is attached to the functional group is called as alpha carbon. Oh, You know this? no. Okay. So remember this, the first carbon atom that is attached to the functional group is called as alpha carbon. Okay, I will repeat myself. The first carbon atom that is attached to the functional group is called as alpha carbon atom. समझा इतना आपको मैडम? Yeah. ओके, तो ये है अपना CH3X. Now you tell me this alpha carbon atom is attached to how many other carbon atoms directly? Where? Which one? This one, CH3X वाला. हाँ, उसका क्या? So alpha carbon atom is attached to how many other carbon atoms directly? In this case, zero. Zero. Very good. So just remember this. In this case, it is coming to zero. Yeah. Now, how about this question? Suppose if I give you CH3, What if there's a long chain? that's what I am giving you right now. Yeah. CH3, CH2X. So Okay. can I say that this is nothing but your functional group? This one is your what? Alpha carbon atom. This is your Yeah. alpha carbon atom, right? Yeah. Yeah. Okay. Now, in this case, alpha carbon atom is attached to how many other carbon atoms directly? One. One. So now listen to me very carefully. When alpha carbon atom is attached to one or zero other carbon atoms directly, such kind of monohalogen derivatives are popularly called as primary monohalogen derivatives. क्या बोलना है उसको? Primary Primary monohalogen. monohalogen derivatives. And they are basically called as haloalkanes. क्या बोलेंगे उन? Yeah, sorry, I had got disconnected. Yeah, Uh, that's okay. yeah, so I was telling you that they are called primary haloalkanes. They are called primary haloalkanes. Yeah. Okay, primary is also abbreviated as 1 degree. So they are called 1 degree haloalkanes. And these haloalkanes are also called as alkyl halides. क्या बोलेंगे उसे हम? अल्काइल हलाइड्स. तो ये जो मैंने आपको बताया ना दो एग्जांपल्स, दे आर एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी अल्काइल हलाइड्स. क्या बोलेंगे उसको हम? प्राइमरी Primary alkyl अल्काइल halides. हलाइड्स. नाउ, Okay. Haloalkanes or alkyl halides? yes, haloalkanes is the IUPAC name, whereas alkyl halides is its common name. Now look at this structure, okay? Suppose if they give you something like this, CH3, CH, CH3, and halogen. So who is the functional group over here? This. X. Yeah. Where is your alpha carbon atom? The one that's attached to X. Alpha. Now this alpha carbon atom is attached to how many other carbon atoms directly? Two, so it will become secondary haloalkane. So this is attached to two other carbon atoms directly. So it becomes secondary alkyl halide or secondary haloalkane. And it is abbreviated as 2 degree. It is abbreviated as 2 degree halide. 2 degree halide. Okay, now look at this example now. Suppose if I give you this case, CH3C, CH3,
Who is the functional group over here? X. It's, so where is our alpha carbon atom? The middle one. Hmm. So this alpha carbon atom is called as tertiary alkyl halide, and it is abbreviated as 3 degree. Got it? Yeah. So primary, secondary, and tertiary, they all fall under the same belt. They are popularly called as haloalkanes. क्या बोलेंगे उसको हम? Haloalkanes. हाँ, because they are substituted from alkanes. मतलब they are these products are obtained by substituting hydrogen atoms in an alkane. Yeah. Okay, and haloalkanes are popularly also called as alkyl halides in common name. Yeah. Okay. So all these are alkyl halides only, whether they are primary, secondary, or tertiary. Now the 99% of the chapter rotates around this part only, alkyl halides. So we need to know that its general representation is R dash X. Whenever you see R dash X, it is an alkyl halide. Okay. You need to know the general molecular formula also. You know what is the general molecular formula for an alkane? CnH. Wait, 1 minute. It is CnH2n plus Yeah. 2. Student. Okay. Plus So 2. for an alkyl halide, it is like CnH2n plus 1 dash X, because you are substituting one hydrogen by a halogen atom. Got it? So we need to know all these things. So this concept is clear regarding Yeah. haloalkanes. Yeah. Okay. Now the next classification is regarding haloalkenes. Haloalkenes. So haloalkenes में क्या होता है? Like for example, you take any alkene and you substitute one of the hydrogen atoms by a halogen atom like this. See, this was an alkene, but you are substituting one hydrogen atom by a chlorine atom. So this will Yeah. become haloalkene. It will become haloalkene. That means in alkene you are substituting hydrogen and keeping a halogen out over there. So Yeah. can you tell me then what shall be the meaning of a haloalkyne? Um, Same. You substitute one You hydrogen will substitute one hydrogen atom in alkyne. of a alkyne. Now it will be an alkyne, no? It Yeah. will be an alkyne. Hemant sir, just 1 minute. Hmm. Okay. So this will be a haloalkyne. Got it? Yeah. Okay. Now let's try to understand this. Next जो हमें पढ़ना है, so that is called as, this is very important now. This is called as allylic halide. Allylic halide. Okay. अब Yeah. यहाँ पे ध्यान दो, you have CH2 double bond CH2 and X. So X can be anything, chlorine, bromine, iodine. Okay. So this is called as allylic halide. How do we recognize this? Then tell them कि sir ये C double bond C जो दिख रहा है ना, C double bond C. ओके. Mm. ये C double bond C के बाजू वाला जो कार्बन रहेगा ना, ओके, उसको हम बोलेंगे अलाइलिक कार्बन. क्या बोलेंगे उसे हम? Allylic अलाइलिक. carbon. Do you know little bit about hybridization? Have you heard of Yeah. something called Hybridization, I'm aware. sp3sp2? Aware. Yeah. 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 या, तो कैन आई से दैट हेलोजन के बाजू वाला जो कार्बन है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है? Mm. sp3 का मतलब होता है सारे सिंगल बॉन्ड्स होंगे, सारे सिंगल बॉन्ड्स. Yeah. Mhm. हाँ. तो दिस इज sp3. एंड उसके बाजू वाला जो कार्बन होगा, ये वाला जिसपे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, वो SP. sp2 होगा. Yeah. Okay, so what are allylic halides? Then tell them that halogen is attached to a sp3 carbon and that in turn is attached to a sp2 carbon. इसको हम बोलेंगे allylic halide. समझ में आया ये? Yeah. But sp3 wala carbon is the allylic carbon, right? हाँ हाँ.
So you can say that the halogen is present on an allylic carbon. That's it. Okay. एक होता है allylic और इसके भाई के लिए हम ये बोलेंगे, इसके भाई का नाम पहले देख लेते हैं। इसके भाई का नाम है विनाइलिक हलाइड्स। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट आर विनाइलिक हलाइड्स। तो बोलेगा सर उसमें यू विल हैव दिस एज योर एग्जांपल, CH2 डबल बॉन्ड CH एंड यू विल हैव Cl। तो बोलेगा सर हेलोजन जो कार्बन से अटैच्ड है ना, वो कार्बन खुद ही sp2 हो जाएगा। अलाइलिक में वो sp3 था, यहाँ पे sp2 हो जाएगा। सो द डिफरेंस बिटवीन अलाइलिक एंड विनाइलिक सेज दैट in allylic halide the halogen is attached to sp3 carbon, which in turn is attached to sp2 carbon, whereas in vinylic halides the halogen is itself attached to a sp2 carbon। समझा ये मैडम? Yeah. हाँ, सो दिस इज allylic vinylic। नाउ द नेक्स्ट पार्ट में आप ये बोलेंगे, नेक्स्ट पार्ट में आप ये बोल देंगे, रुको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ पे लिख देते हैं द नेक्स्ट पार्ट इज रिगार्डिंग बेंजाइलिक एंड साइक्लिक हलाइड्स। तो वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, बेंजाइलिक हलाइड्स। बेंजाइलिक हलाइड्स जो है, सो दिस इज लाइक बेंजाइलिक हलाइड। क्या बोलेंगे बेंजाइलिक हलाइड में? बेंजाइलिक हलाइड में हम ये बोलेंगे कि द हेलोजन इज इनडायरेक्टली अटैच्ड टू एन एरोमेटिक रिंग लाइक अ बेंजीन रिंग। द एरोमेटिक रिंग इज द बेंजीन रिंग। Yeah. और उसको टेक्निकल टर्म्स में बोलना है तो यू विल से दैट Phenyl. फिनाइल रिंग। यस, एरोमेटिक रिंग, फिनाइल रिंग, और बीच में एक आपका sp3 कार्बन होगा। So there will be a sp3 carbon between the halogen and the phenyl ring. So that's a benzylic halide. Okay. Now the next one is a cyclic halide। कि ये cyclic halide क्या होता है? Let's try to understand it। तो बोलेगा सर cyclic halide में क्या होता है? You will have a ring like this without any resonance and the functional group is directly attached to it. And the functional group is directly attached to it. Okay, so what is the difference between benzylic and cyclic? बताइए मुझे। In benzylic, the functional group is indirectly attached to the benzene ring through an sp3 hybridized carbon atom. But in cyclic halides, it's directly attached to the benzene ring. हाँ, बट नो रेजोनेंस। हाँ, रिंग में रेजोनेंस नहीं, साइक्लिक में। तो cyclic में resonance नहीं? नो रेजोनेंस, हाँ, गॉट इट। Yeah. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज हेलोअरीन्स। तो हेलोअरीन्स में क्या होता है? यू टेक एन एरोमेटिक रिंग लाइक अ बेंजीन रिंग and you directly attach the functional group to it। directly attach करो functional group to it। okay, so you will say that the carbon which is attached to the functional group, that is halogen, which is the alpha carbon, na? This is alpha carbon. So alpha carbon over here you will say that it is sp2 hybridized in arenes, which is called haloarenes, it is sp2 hybridized। got it? Yeah. So this is all about monohalogen. Huh? Monohalogen is a very vast classification. See, you will have haloalkanes, haloalkenes, haloalkynes, allylic halide, vinylic halide, benzylic halide, cyclic halide, and arenes. 8 classification. Then in haloalkanes, you will have three more further. That is primary, secondary, and tertiary. Got it, Mm. madam? Got it. Okay. Now the next thing. Next thing is this was all about monohalogen. Now, for example, if I have a dihalogen derivative, so dihalogen means you will have two halogen atoms. You will have two halogen atoms. So dihalogen में क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो, dihalogen में there will be two types. One is like vicinal and the other one is geminal. So you have something called as vicinal and something called as geminal. So in vicinal, you are going to draw this structure. See.
they say that in vicinal dihalide, you will have two halogen atoms which are on the adjacent carbon atoms. ओके, आजू बाजू वाले कार्बन पे रहेगा ये। और जेमिनल में क्या होता है, तो बोलने का सर जेमिनल में दोनों हेलोजन एटम जो है वो सेम कार्बन पे रहेगा। फर्स्ट का स्पेलिंग क्या है? विनाइल। VICINAL, vicinal, ओ, VICI, विसिनल। vicinal, and then you have geminal। ठीक है, सो डिफरेंट समझा आपको विसिनल जेमिनल में? या। हाँ, विसिनल मतलब टू हेलोजेंस ऑन एडजेसेंट कार्बन एटम्स, वन ऑन ईच एडजेसेंट कार्बन। जेमिनल में on the same carbon you will have two halogens। Okay, so this was all about dihalogen। Now you have something called as polyhalogen। Polyhalogen में you will have you know, tri, tetra, penta, hexa, and so on। So suppose if I give you trihalogen derivative, तो ट्राइहेलोजन में कितना हेलोजन होगा, तो बोलेगा सर तीन रहेगा, सिंपल। बेस्ट एग्जांपल आई कैन गिव यू इज CHCl3। यू नो CHCl3 इज कॉल्ड क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म बोलते हैं इसको। क्लोरोफॉर्म कहाँ पे यूज होता है मेडिकल फील्ड में? लाइक एन एनेस्थेटिक हाँ, यू से। एनेस्थीसिया में यूज होता है। बराबर है ये। और वो मूवीज में बताते हैं ना, बेहोश करके लेकर जाते हैं, किडनैपिंग। या ओमनी वैन में आते हैं, या सुंघा के लेकर जाते हैं, सो दैट्स क्लोरोफॉर्म। ओके, ओके। बट ऑब्वियसली दैट इज अ कॉन्सेंट्रेटेड क्लोरोफॉर्म। अब टेट्रा हेलोजन में कितना हेलोजन होगा बताओ? फोर। टू, यस। सो आई विल राइट टेट्रा में you will have four halogen atoms। You need to know only one example as of now, CCl4। इसको बोलते ओ, हैं काली टेट्रा। क्लोरो। या। हाँ, this is used in fire extinguishers in the name of pyrene, PYRENE। It is one of the ingredients of a fire extinguisher। Got it, madam? यस। ओके, सो ये था ट्राई, टेट्रा, फिर पेंटा, हेक्सा, ये सब आएगा क्लासिफिकेशन। क्लियर हुआ है ये? पक्का? ओके। अब वैसे ही जैसे वो हेलो अरेन्ज किया था, उसमें भी तो दो हेलोजन आ सकते हैं, तो उसको हम डाई हेलो अरीन बोलेंगे। डाई हेलो अरीन। सो डाई हेलो अरीन बोलेंगे ना, तो ऐसे लिखने का, दो हेलोजन एटम रहेगा, दो, ऐसा, लाइक दिस। सो तीन रहेगा तो ट्राई, चार रहेगा तो टेट्रा, एंड सो ऑन। गॉट इट? या। So that completes the classification part। So what we have to do in classification? We will say that this halogen derivatives are classified into monohalogen and polyhalogen. Okay. In monohalogen, only one hydrogen atom of a hydrocarbon is substituted by one halogen atom। It is further classified into haloalkane, haloalkene, haloalkyne, allylic, vinylic, benzylic, cyclic, and haloarenes। What are haloalkanes? They are halogen derivatives where the one hydrogen atom of an alkane is substituted by one halogen atom। Got it? And या। it is further classified into primary, secondary, and tertiary। In primary, you will say that alpha carbon atom is attached to one or zero other carbon atom। Okay. Secondary में it is attached to two other, tertiary में attached to three other। अलाइलिक विनाइलिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अलाइलिक में क्या होता है, हेलोजन इज अटैच टू अ कार्बन विच इज sp3, एंड दैट इन टर्न इज अटैच टू अ sp2 कार्बन। या। विनाइलिक में क्या होता है, हेलोजन इज अटैच टू अ sp2 कार्बन। फिर वो बाकी हमने किया साइक्लिक एंड बेंजाइलिक। बेंजाइलिक में यू विल हैव अ फिनाइल रिंग, यू विल हैव अ हेलोजन एटम, एंड बिटवीन यू विल हैव अ sp3 कार्बन। साइक्लिक में क्या होगा, the halogen is directly attached to an alicyclic ring like cyclopropane, butane, cyclopentane, cyclohexane, cycloheptane, and so on। हेलोअरीन्स में क्या होगा, the halogen is directly attached to an aromatic ring जिसको हम बेंजीन बोलते हैं। ओके, एंड देन वी हैव डाई, ट्राई, टेट्रा। डाई मतलब दो हेलोजन, ट्राई मतलब तीन, टेट्रा मतलब ऑब्वियसली चार हेलोजन। वेट, यू सेड साइक्लिक हलाइड्स में हम्म इट कैन बी ब्यूटेन, प्रोपेन।
सॉरी, साइक्लिक हलाइड्स में You said butane? साइक्लोब्यूटेन, Cyclobutane. साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोब्यूटेन, हाँ. साइक्लोपेंटेन, साइक्लोहेक्सेन, कुछ भी ले सकते हो आप, साइक्लिक होना चाहिए सिर्फ। So the हम्म। which is usually a straight chain, it just becomes cyclic, हाँ, right? यस यस। मैं आपको और एक एग्जांपल दे देता हूँ। देखो साइक्लिक में क्या करोगे, ये मैंने हेक्सागन का रिंग लिया था। सी द रिंग दैट आई हैव टेकन ओवर हियर, दिस रिंग इज अ हेक्सागन रिंग व्हिच Yeah, हैज that's what सिक्स। I was thinking. Yeah. हाँ, यू कैन टेक 5 कार्बन एटम्स वाला रिंग, ऐसा पेंटागन बना दो। हाँ. तो cyclopentane. साइक्लोपेंटेन, यस, साइक्लोपेंटेन रिंग आप ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है। फिर Yeah. वो विसिनल जेमिनल, विसिनल मतलब सेम कार्बन पे, सॉरी विसिनल मतलब एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन, और जेमिनल मतलब सेम कार्बन पे दो हेलोजन। गॉट इट? Yeah. ओके। नाउ वी हैव टू गो फॉर द क्लासिफिकेशन के बाद नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर हेलो अल्केन का सबसे पहले पढ़ना है। जैसे मान लो उन्होंने आपको ये दे दी, CH3I, सो वी हैव टू स्टडी टू नेम्स, कॉमन नेम एंड IUPAC नेम। ओके, कॉमन नेम में आपको ये याद रखना है, कॉमन नेम में अल्काइल हलाइड इज द कॉमन नेम, सो यू नो द अल्काइल ग्रुप्स लाइक मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल वगैरह सब। Yeah. तो इसका कॉमन नेम क्या आएगा बताइए, अल्काइल हलाइड के हिसाब से? Methyl iodide. हाँ, वेरी गुड। और जो IUPAC नेम होता है ना, IUPAC नेम, हाँ, हाँ. उसको हम बोलते हैं हेलो अल्केन। तो व्हाट शैल बी द IUPAC नेम देन? Uh, iodine, iodine Iodomethanes, methyl yes, it is called iodomethane. iodine. समझ में आ रहा है मैडम ये? Yeah, yeah, yeah. तो इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, IUPAC is the halogen haloalkane. हेलो अल्केन, यस, एंड अल्काइल हलाइड इज द कॉमन नेम, अल्काइल हलाइड इज द कॉमन नेम, एंड हेलो अल्केन इज द IUPAC नेम। नाउ गो फॉर दिस वन, गिव मी द कॉमन नेम, गिव मी द IUPAC नेम। Um, yeah. The common name would be बताइए क्या it होगा? would be uh हम्म। ethyl हाँ, bro इथाइल व्हाट? ethyl bromide Yes, it has to be ethyl bromide. And and IUPAC name will be bromoethane. ब्रोमोइथेन। ओके, ठीक है। चलो अभी अभी यहाँ पे ध्यान दो, आपको बॉन्ड लाइन आता है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर्स? Yeah, yeah. ओके, तो वो भी करेंगे हम, बट जैसे मान लो आपको ये वाला दे दिया, हाँ, सिंस यू आर गिविंग एंट्रेंस एग्जाम ना, सो आई एम नॉट राइटिंग हाइड्रोजन एटम्स। Yeah, fine, no problem. हाँ, सपोज इफ दे गिव यू समथिंग लाइक दिस, तो यहाँ पे अभी हमको कॉमन नेम और IUPAC नेम पढ़ना है। तो Hmm. कॉमन नेम के लिए आप सबसे पहले, मतलब आप ये देखो, ये लॉन्गेस्ट टेन तो आप ले ही रहे हो ऐसे, हाँ. है ना, आप नंबरिंग भी कुछ ऐसा करोगे, 1, 2 और 3, बराबर। कॉमन नेम कर रहे हैं अभी हम, सो यू हैव 3 कार्बन एटम्स इन द लॉन्गेस्ट चेन, एंड द हाँ. हेलोजन एटम इज अटैच्ड ऑन द फर्स्ट कार्बन, Right. and you do not have any other carbon branches. Hmm. So this group is called as Chloropropane. N, N कंसेप्ट बोलते हैं। तो ये एक्चुअल में इसका नाम क्या होगा पता है? इसका अभी नाम हो जाएगा N, और 3 कार्बन एटम है तो प्रोपाइल। सो दिस इज लाइक N प्रोपाइल एंड देन क्लोराइड, N प्रोपाइल क्लोराइड। But why N? N represents that it is a normal chain. That means the functional group is present on first carbon and you do not have any other carbon branches. Got it? Just a minute. Okay. अब नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाला, ओके, जो नेक्स्ट वाला अगर हम करते हैं, यहाँ पे ध्यान दो, नेक्स्ट वाला वो ऐसा कुछ करेंगे, देखो। आप इसका लॉन्गेस्ट चेन ले लो, लॉन्गेस्ट चेन इसका ले लो, कितने कार्बन बन रहे हैं लॉन्गेस्ट चेन में, देखो जरा। 3. 3, वेरी गुड। But you can't call it N, right?
we can't call it as N because the functional group is not on the first carbon, na? Yeah. Okay, when the functional group, listen to me very carefully. I have PPTs for this. I will share you the PPTs so that you can go through them properly. When the functional group is attached on second carbon atom, when the functional group is attached on second carbon atom, that concept is popularly called as sec concept. So this is going to be like sec propyl chloride. This will be called as sec propyl chloride. Can you give me the IUPAC name for this? Yeah. Um, okay. Hmm. Propyl chloride. No, propyl two chloride. Propyl 2 chloride. हाँ, but IUPAC name is haloalkane, na madam. So it will Oh, be 2-chloropropane. हाँ, 2 chloropropane. So why we have to write N and sec? Because see, if I ask you to draw propyl chloride, so you may draw the first structure, you may draw the second structure also. So we have to specify whether it is N or sec. मिथाइल और इथाइल में ऐसा कुछ नहीं होता है. Yeah. तो N और sec समझा आपको? Yeah. Okay. Now suppose if they tell you draw the structure of Wait, iso. haloalkane is IUPAC, right? हाँ, टू Yeah. chloropropan. Now suppose if they ask you draw the structure of isobutyl chloride and write its IUPAC name. So ISO का मैं आपको है ना अभी ट्रिक बता देता हूँ. What is the trick for ISO? The trick says that just count the number of total carbon atoms. ब्यूटाइल मतलब कितने कार्बन एटम्स रहेंगे बताना. 4. 4. वेरी गुड. सो -1 करना है. अगर हम -1 करेंगे मैडम, सो हाउ मेनी कार्बन एटम्स यू विल बी एबल टू सी इन द लॉन्गेस्ट चेन? 3. 3. So see, you have to draw first 3 carbon atoms. You will place the functional group immediately on the first carbon. So which means that if this is your longest chain now, by default over here we will say that in such cases you will start the numbering from here so that chlorine should get the least number. Yeah, yeah. Okay, now can I say that this carbon, which is the second carbon, is also second last carbon atom over here Yeah. in the longest chain. So on the second last carbon atom in the longest chain, you are going to put one methyl group. You are going to put one methyl group. So when you have a branch of one methyl group on the second last carbon atom in the longest chain, that concept is called as isobutyl chloride. Is this understood, madam? Yeah. Now give me the IUPAC name and be very careful. We have to put a methyl group, right, on the Yes, second last carbon atom. yes, yes, yes. Okay. Hmm. IUPAC name. So select the longest chain. You will say that see this is chlorine. Yeah. So it's 1. ठीक है, 1 तो नहीं आएगा. आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? Because the अच्छा, longest यू आर chain टेलिंग could. दैट बाय डिफॉल्ट वो 1 पे ही प्रेजेंट है. हाँ, बट हाँ. फिर भी नीट में वी हैव टू राइट इट. Oh, you have to. Oh यस God. यस, Okay. बिकॉज Wow. एनसीईआरटी में दिया है तो हमें भी वो लिखना है. सो अच्छा. वी विल से दैट It's 1 chloro 2 methyl um, हाँ, 1 chloro 2 methyl propane. propane. समझा? Yeah. ओके. सो इफ यू हैव अंडरस्टूड आइसोब्यूटाइल, हेल्प मी आउट विथ isopentyl. Isopentyl chloride. Yeah. हम्म. Okay. Just a minute. I'll draw the structure, then I'll tell you. हाँ हाँ. तो कैसे करेंगे पता है? आइसो में जस्ट अप्लाई द ट्रिक. पेंटाइल है. Yeah, yeah. हाँ. Got it. So this would be हम्म. um
1 chloro 3 methyl propane, propane नहीं, butane. हाँ, तो मैं बना देता हूँ. इट शुड लुक समवॉट लाइक दिस. एक, दो, तीन, चार और पाँच, ऐसा कुछ आ रहा है क्या? Yeah. 1 chloro 3 methyl butane. So iso pentyl is clear to you. Yeah. Please draw isohexyl chloride. It would be 1 chloro, हम्म. uh, 4 methyl हम्म. pentane. ऐसा. Yeah. 1 chloro 1 2 3 4 4 methyl pentane. So is iso concept clear to you now? Yeah. Yes. Okay. Now let's go for sec, जो प्रोपाइल में भी किया था. अब मान लो दे टेल यू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ sec butyl, say iodide now. ठीक है. So how to draw? The trick is butyl means you will have four carbon atoms. Yes. Okay? So sec means on second carbon you will place the functional group. Yeah. सो ब्यूटाइल मीन्स 4 कार्बन, तो ये बनाया मैंने 4 कार्बन. सेकेंड कार्बन पे मैं हेलोजन रख दूंगा बिकॉज यहां से मैं नंबरिंग कर रहा हूँ. बराबर ना? Yeah. विद आईयूपीएसी नेम फॉर दिस. Um, yeah. हम्म. 2 iodo टू butane. iodobutane. Yes, it is 2 iodobutane. Got it, madam? Yeah. तो if you have understood sec. Sir, Yes, इधर numbering like if you लेफ्ट हैंड साइड से आपने किया है, but you can do it from the right hand right side hand side also. also, right? Yeah. But then the halogen has to be on the On the second third one, carbon on the from that इधर side. वाला third one. Yeah. हाँ, वो उसका इसी का मिरर इमेज बनेगा, तो दैट्स हाँ. ओके, दैट्स करेक्ट. तो ये था सेक ब्यूटाइल. अब आ जाएगा अपना सेक पेंटाइल. बता दो. सेक पेंटाइल बनाओ और आयोपैक नेम दे दो. सेक पेंटाइल आयोडाइड की बना दो. Yeah, that would be 2 iodo. पेंटेन. 2 आयोडोपेंटेन. इट शुड लुक समवॉट लाइक दिस. एक, दो, तीन, चार और पांच. एंड हियर यू विल हैव आयोडीन. Yeah. समझा? Yeah. सेक कंसेप्ट क्लियर हुआ. तो Yes. एन हो गया, आइसो हो गया, सेक हो गया. अब क्या पूछेंगे पता है वो लोग? व्हाट इज द आईयूपीएसी नेम ऑफ टर्ट ब्यूटाइल से ब्रोमाइड? अब टर्ट पे जाना है. टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड. तो हाउ टू डू दिस? जस्ट लुक एट द स्ट्रक्चर, हाउ इट इज ड्रॉन. फर्स्ट यू ड्रॉ द हेलोजन एटम. हु इज द हेलोजन एटम? ब्रोमीन, राइट? ब्रोमाइड मतलब ब्रोमीन होगा. नाउ द फर्स्ट कार्बन एटम दैट इज अटैच्ड टू ब्रोमीन को हम क्या बोलेंगे बताइए? अभी बताया. Carbon at alpha. अल्फा कार्बन. वेरी गुड. सो दिस इज अल्फा कार्बन एटम. द Yeah. डेफिनेशन ऑफ टर्शरी, which is called tert, says that alpha carbon atom is attached to three other carbon atoms directly. Alpha carbon atom is attached to three other carbon atoms directly. So you will put one carbon above, one towards the left, and one below. So this is called third butyl bromide. And Yeah. total are four. So four carbons are over. So now if you select the longest chain, the longest chain should look something like this. This will be like over here. One, So 2 bromo, 2 methyl propane. two bromo, two methyl propane. Perfect. So this is like third butyl. Now can you draw third pentyl on your own, madam? Yeah. हाँ, try करो third pentyl and maybe you can give me the IUPAC name also. आपको समझ रहा है मैडम ये? Yes. पक्का? Yeah. गुजराती समझे છે ને? हाँ हाँ, समझ. हाँ, तो is it okay if I teach you in Hindi, English, You can switch sometimes anytime. Urdu? Yeah. Where do you stay? Bombay. अच्छा, you stay in Bombay? Yeah. I thought पार्ला में रहते हो शायद आप. No.
बॉम्बे, मुंबई, अंधेरी। अच्छा वैसा, बॉम्बे मतलब हाँ। मैं वर्ली साइड समझा, नो अंधेरी नो साइड लो। नो नो। ओके। हाँ। विथ व्हाट वाज द क्वेश्चन? हाँ, टर्ट टर्ट पेंटाइल ब्रोमाइड बनाना है। आई राइट इट डाउन। डॉट। टर्ट पेंटाइल। टर्ट पेंटाइल ब्रोमाइड। तो अभी ये कैसे करेंगे बताओ, यहाँ पे यू विल हैव ब्रोमीन ओवर हियर। आई थिंक आई गॉट इट। हम्म। It should be the IU pack should be uh ये 2 bromo 2 methyl butane. परफेक्ट, it will be 2 bromo 2 methyl butane. So that is also clear. Now let's go for the next concept, that is neo. They will give you, draw the structure of neo, say pentyl. Neo pentyl bromide. So neo pentyl, pentyl means how many carbon atoms, madam? 5. 5. So what was the trick for iso, you remember? For iso I told you that -1 कर दो आप, Yeah. और सेकेंड लास्ट पे एक छतरी लगा दो, छतरी मतलब CH3। ओके। Yeah. नियो में क्या करना है, यू हैव टू डू -2। सो यू हैव नियो पेंटाइल ब्रोमाइड, सो पेंटाइल मीन्स 5 कार्बन एटम्स, -2 करोगे तो यू विल हैव 3 कार्बन एटम्स इन द लॉन्गेस्ट चेन। तो पहले 3 कार्बन बना दो ऐसा, 1, So you have to subtract 2, right? या -2 करना है हमेशा। फर्स्ट कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप लगा दो ब्रोमीन, और सेकेंड लास्ट पे, आइसो में 2 छतरी होता था, यहाँ पे एक CH3 होगा, सो दिस विल बिकम नियो पेंटाइल ब्रोमाइड। गिव मी द IUPAC नेम प्लीज। 1 bromo, 2 dimethyl हाँ, 1 ब्रोमो 2 डाइमिथाइल propane. प्रोपेन। Yeah. गॉट इट? Uh, yeah. So what did you say? We subtract 2 carbon atoms. From the total number of carbon atoms. So, हाँ. like for example, if they give you neohexyl bromide banao, so you tell me hexyl will have how many carbon atoms? 6. 6. So -2 So 4. you will draw 4 carbon atoms, and on the second last you will place 2 CH3s. That's it. And the functional group will be on first carbon. So like this. Yeah. Got it. ओके। IUPAC नेम क्या आएगा इसका? Um, 1 bromo 2 dimethyl butane. हाँ, 1 ब्रोमो 2 नहीं, 3। नंबरिंग आप यहां से करोगे मैडम, 1 ब्रोमो 3, Oh 3 shit, yeah, डाइमिथाइल sorry. ब्यूटेन। Yeah, गॉट इट? हाँ। my bad. Yeah. सो नाउ यू आर क्लियर विथ एन आइसो सेक्टर नियो। Yeah. एन का मतलब नॉर्मल चेन, आइसो का मतलब सेकेंड लास्ट पे एक CH3, सेक का मतलब सेकेंड पे फंक्शनल ग्रुप, थर्ड का मतलब अल्फा इज अटैच टू 3 अदर कार्बन एटम्स डायरेक्टली, और नियो का मतलब सेकेंड लास्ट पे 2 CH3। गॉट इट? तो ये वो अल्काइल हलाइड के बारे में था। अब अल्काइल हलाइड के बाद अगर आप देखो, ये वाला प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सब हमने कर लिया। अब इसके बाद अपने को करना था अलाइलिक हलाइड। Yeah. जैसे मान लो इफ दे गिव यू समथिंग लाइक दिस, सी डबल बॉन्ड सी, सी, एंड देन मान लो यहाँ पे क्लोरीन दे दिया, तो इसका है ना एक फिक्स कॉमन नेम है जो आपको याद रखना है। इट इज कॉल्ड अलाइल क्लोराइड। क्या बोलेंगे इसको हम? अलाइल। Allylic chloride. Allyl fluoride. Okay. हाँ, मतलब इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अलाइलिक हलाइड, बट द नेम इज अलाइल क्लोराइड। Okay. ओके, जैसे मुझे बताओ, सी एच
CH3 एक फिक्स वैल्यू है ना मिथाइल का, वैल्यू मतलब फॉर्मूला या है ना। तो वैसे ही अलाइल ग्रुप जो है ना वो एक फिक्स फॉर्मूला है इसका, जिसको मैं अभी हाईलाइट करूंगा रेड कलर से। दिस ग्रुप इज कॉल्ड अलाइल। अब मान लो मैंने क्लोरीन लगाया है तो आप अलाइल क्लोराइड बोलोगे। OH लगा दिया तो अलाइल अल्कोहल बोलोगे। NH2 लगाया तो अलाइल अमाइन बोलोगे। Br लगाया तो अलाइल ब्रोमाइड बोलोगे। C ट्रिपल बॉन्ड N लगाया तो क्या बोलोगे पता है आपको? सी ट्रिपल बॉन्ड N लगा दिया तो सी ट्रिपल बॉन्ड एंड साइनाइड बोलते हैं उसको। सी ट्रिपल एन बॉन्ड एन हाँ ओके ओके आई हर्ड समथिंग एल्स या सी साइनाइड या ट्रिपल सी बॉन्ड एन एन इज साइनाइड, तो हाँ दैट विल बिकम अलाइल। अलाइल साइनाइड तो ये या ग्रुप को याद रखना है। चलो अभी आयुपैक नेम दे दो, आयुपैक नेम। दिस इज वन क्लोरो वन टू थ्री पेंटीन सॉरी, व्हाट क्लोरोपेन? प्रोपीन प्रोपीन प्रोपीन। प्रोपीन व्हाट क्लोरोप्रोपीन? वन नो वेट नो वेट नंबरिंग चेंजेस एक मिनट Um, I forgot when you are numbering, do you give priority to halogen first or the bond हाँ, first? तो आई विल गिव यू दैट रूल बिकॉज Yeah, I इट forgot the इज अ rules. थिंग दैट पीपल ऑलवेज फॉरगेट, स्टूडेंट्स Yeah. ऑलवेज फॉरगेट। सो first of all I will tell you how do we write the IUPAC names. So the IUPAC names are written in such a way that सबसे पहले हम P2 लिखते हैं, उसके बाद P1 लिखते हैं, हाँ, उसके बाद हम लिखते हैं रूट वर्ड, उसके बाद हम लिखते हैं S1, उसके बाद हम लिखते हैं S2। अभी ये सब क्या लिखा है सर आपने? P2 का मतलब प्रीफिक्स टू, P1 इज प्रीफिक्स वन, RW इज रूट वर्ड, S1 इज सफिक्स वन, S2 इज सफिक्स टू। सर ये P2 में क्या क्या आता है? तो लेंगे सर P2 में आता है मिथाइल और इसके सारे भाई बहन। कौन कौन? मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, सारे। और वो सब तो आएगा, इसके अलावा और क्या आता है? इसके अलावा और आता है आपका हेलोजन, तो जिसको हम हेलो बोलेंगे। फिर P2 में आता ही ना है, हाँ, P2 में ही ना हाँ P2 में ही नाइट्रो। देन यू विल हैव अल्कोक्सी। अल्कोक्सी इज अ ग्रुप विच इज प्रेजेंट इन ईथर्स। या हाँ, अल्कोक्सी अल्केन होता है ना वैसा। या तो ये सब आता है। सर P1 में क्या आता है बोलेगा? सर P1 का लाइफ एकदम सॉर्टेड है। यू हैव ओनली वन थिंग दैट इज साइक्लो। ओनली साइक्लो वर्ड इज यूज्ड इन प्रीफिक्स वर्ड। ओके, मतलब एक ही चीज आता है साइक्लो। रूट वर्ड तो स्कूल में भी हमने पढ़ा ही है। इफ यू हैव वन कार्बन एटम इट इज कॉल्ड मिथ, इफ यू हैव टू कार्बन एटम्स इट इज कॉल्ड इथ, इफ यू हैव थ्री कार्बन एटम्स यू विल कॉल प्रोप, फोर के लिए यू विल राइट ब्यूट, ब्यूट या एंड सो ऑन। जो सफिक्स वन होता है, सफिक्स वन, वो होता है एन, इन, आइन, एन इन आइन। समझा ये? या और जो पेरेंट फंक्शनल ग्रुप होता है उसमें आ जाते हैं सारे PFG। सफिक्स टू इज पेरेंट फंक्शनल ग्रुप। सर हाउ डू आई कम टू नो हु आर द पेरेंट फंक्शनल ग्रुप्स? तो बोलेंगे सर देर आर 23 फंक्शनल ग्रुप्स, लिसन टू मी वेरी केयरफुली, देर आर 23 फंक्शनल ग्रुप्स, आउट ऑफ विच आउट ऑफ विच six functional groups are already covered either in prefix 2 or in suffix 1, like see halogen, है ना, halogen is covered in prefix, nitro is covered in prefix, alkoxy is covered in prefix, ane, ene, ine, all of them are covered in prefixes, so remaining are how many? there are 23 right Hmm. so 17. yeah 17 functional groups, all of them are in PFG. Like who all are there? You will have alcohols, aldehydes, ketones, carboxylic acids, acid yeah 1 degree, 2 degree, 3 degree amines, 1 degree, 2 esters degree, yeah 3 degree amides, acid halides, acid anhydrides, phenols, cyanides, uh,
then esters, all of them, they will phenols, all of them will fall under suffix 2. So this is how you write the name. First you write prefix 2, then prefix 1, then root word, then suffix 1, and then suffix 2. So for example, uh, ओके आफ्टर दिस एक मिनट में आपको और एक छोटा सा रूल बताता हूँ एंड देन वी गो ऑन टू दैट क्वेश्चन। आपका डाउट था ना कि क्या प्रायोरिटी कैसे देना है। तो सबसे पहले यू हैव टू गिव प्रायोरिटी टू पेरेंट फंक्शनल। ओके, आफ्टर पेरेंट फंक्शनल ग्रुप you give priority to multiple bonds like double triple bonds। उसके बाद you will give priority to number of carbon atoms। उसके बाद आप प्रायोरिटी में दोगे नंबर ऑफ कार्बन ब्रांचेस। उसके बाद यू विल गिव प्रायोरिटी टू लोकंस एंड एट लास्ट यू विल गिव प्रायोरिटी टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर। What is locants? मैं बताता हूँ, 1 मिनट। सो दिस इज हाउ वी गिव दैट प्रायोरिटी। लोकंस मीन्स आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल। ओके, the example goes something like this. I will give you the example here only. Suppose if you know bond line, right? Yeah. Okay. So suppose if they give you something like this is like this. So if you number the chain from either of the ends, you are going to get same number of carbon atoms. Yeah. But still you will number from here because the branches they are getting less number, na? And that's what we need. So Yeah. what is this locant's rule? It says that you tell me this carbon which is highlighted with a green color is present on which carbon? Second. Second. So you will write 2. The other carbon is present on 3. So when you add this number, this is called sum of locants. So locants is the number that is given to the branch or the substituent. In this case, it is methyl. So the number that is given to this methyl, whether it is 2, 3, 4, 5, 6, whatever is the number, is called locants. So when you add this locants, you get 5. But if you start the numbering from right hand side, you will get a very huge number. 1, 2, 3, 4, 5, 5 and 6, 11 आ जाएगा। ये देखो ना, यहाँ से नंबर करोगे, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. So you have a branch on 5 and 6. So 5 and 6 turns out to be 11. So this is the incorrect chain because the sum of locants has to be minimum and it is over here. Got it? Yeah. तो आप प्रायोरिटी किसको दोगे? अभी देखो मल्टीपल बॉन्ड को दोगे ना मैडम। हेलोजन Yeah. अगर है, Yeah. हेलोजन तो प्रीफिक्स 2 में आता है, सो नो प्रायोरिटी। Yeah. सो So it's इट विल बी समथिंग। 3-chloro हाँ, तो इसका नाम क्या लिखोगे? propene. आप लिखोगे 3 3-chloropropene. क्लोरोप्रोपीन। अब ध्यान से सुनना, ये क्या है? 3 क्लोरोप्रोपीन। इसमें अगर आप ये देखोगे ना 3 क्लोरो में, सो दिस 3 क्लोरो इज योर प्रीफिक्स 2। देर इज नो प्रीफिक्स Yeah. 1 इन दिस स्ट्रक्चर। देर इज लाइक साइक्लिक नहीं है ना, तो यू विल नॉट हैव टू राइट साइक्लो। उसके बाद आता है आपका रूट वर्ड विच इज प्रोप। दिस इज योर RW। और लास्ट में आ गया है आपका यहाँ पे ENE विच इज योर सफिक्स 1। सो यू डू नॉट हैव सफिक्स 2 ऑल्सो ओवर हियर बिकॉज यू डोंट हैव एनी अदर फंक्शनल ग्रुप ना। Yeah. Like you don't have alcohol, aldehyde, ketone, acid, ester, amine, amide, acid halide, acid anhydride, cyanides, esters, and so on. Is this clear? Yes. Okay. Let's go for the next one. Suppose if they give you this structure, C double bond C and a Cl. So like ये विनाइलिक हलाइड हो गया ना ये। Yeah. इज दिस विनाइलिक हलाइड? यस, दिस इज अ विनाइलिक हलाइड। सो जैसे ऊपर वाले का एक फिक्स नाम था अलाइल क्लोराइड, वैसे ही इसका एक फिक्स नाम है विनाइल क्लोराइड। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ दिस। ये PVC बनाने के लिए काम आता है। सुना है आपने? नहीं? जो घर में पाइप्स होते हैं ना, पाइप्स Mm. वॉशिंग मशीन के एंड अदर बेसिक पाइप्स, वो PVC के बनते हैं। वो ऐड आता है ना अस्ट्रल पाइप्स का, हाँ.
हाँ, तो वो यही होता है, वो विनाइल क्लोराइड के पॉलीमर्स होते हैं। पीवीसी इज अ पॉलीमर ऑफ विनाइल क्लोराइड, so this is vinyl chloride. I think now you can give me the IUPAC name also. Yeah. Hmm. 2-chloroethene. Why 2-chloro, madam? You start from here, na? Uh, Left hand side. no, why will you start from left? Start from right. क्या इशू है? इन बोथ द केसेस डबल Oh, बॉन्ड को right. तो छोटा नंबर मिल ही रहा है ना. सो देन गिव more priority to chlorine now, because हाँ. you have to give priority to multiple bond. So you have already given it. उसके बाद जो बचा हुआ है उसको भी बुरा ना लगे इसके लिए उसको भी प्रायोरिटी दे दो. सो दिस विल बी लाइक 1-chloroethene. और एनसीईआरटी अपने को यहाँ पे थोड़ा सा लिबर्टी देता है, अगर यहाँ पे 1 नहीं लिखा तो चलता है, बाकी सब में लिखना पड़ता है. तो लाइक इफ यू राइट ओनली क्लोरोइथीन देन ऑल्सो इट इज परफेक्टली फाइन. तो ये विनाइलिक समझा, अलाइलिक हो गया, विनाइलिक हो गया. अब ये वाला देखो, ये वाला स्ट्रक्चर, इसको बेंजाइलिक बोलेंगे. क्या बोलेंगे इसको हम? Xylate. बेंजाइलिक बोलेंगे. तो जैसे वो अलाइलिक का एक फिक्स नाम, विनाइलिक का एक फिक्स नाम, इसका भी एक फिक्स नाम होगा, बेंजाइल क्लोराइड. क्या बोलेंगे इसको हम? बेंजाइल क्लोराइड. नाउ इसका आयुपैक नेम बहुत मजेदार है, चलो आप ट्राई करो, बाद में मैं बताता हूँ. Wait, wait, let me just draw this. हम्म. Yeah. This is देखो लॉन्गेस्ट चेन ऐसा रहेगा, यू विल गेट दिस एज योर लॉन्गेस्ट चेन. See, you have only one carbon atom in the longest chain, no, madam? Only one carbon atom. yeah, yeah. So, what shall be the name? It should be um one Chloro, chlorocyclomethane. phenyl. Just Phenyl. 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 And the longest chain has only one carbon atom. So, Yeah. Methane. chlorophenyl methane. Chlorophenyl. It's called chlorophenyl methane. तो Got it? साइक्लो कहाँ गया? Sorry? साइक्लो. साइक्लो क्यों आएगा मैडम? साइक्लो तो किसके लिए आता है? साइक्लिक कंपाउंड्स के लिए आता है. साइक्लिक मतलब Okay, there's ऐसा. no resonance, right? हाँ, वो अंदर Okay, वो okay. गोला नहीं रहेगा, अंदर वो रेजोनेंस नहीं होगा, उसके लिए होता है ये. ठीक है. तो अभी Yeah. चलो उसके बाद, अभी आपने बोला है तो वही करना था हमें, वैसे भी साइक्लिक वाला ही. अब देखो ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिया है, ऐसा. चलो इसका कॉमन नेम दो, इसका आयोपैक नेम दो. Uh, common name. हम्म. हाँ ये देखो Wait, ये. I'll think. बोलो. Okay, I think it should be cyclo. पेंटाइल क्लोराइड, सिंपल अल्काइल हैलाइड जैसा ही है, साइक्लोपेंटाइल क्लोराइड. और आयोपैक नेम देखो, हेलो अल्केन के हिसाब से क्लोरो साइक्लो पेंटेन, क्लोरो साइक्लो Chlorocyclo पेंटेन. pentane. So the yellow one is the common name. हाँ, येलो इज द कॉमन नेम, यस. वाइट वन इज द आयोपैक नेम. तो ये बन गया अपना, अलाइलिक हो गया, विनाइलिक हो गया, बेंजाइलिक हो गया. अब साइक्लिक भी करवा दिया. अब वो हेलोअरीन बाकी है, सिर्फ हेलोअरीन में देखो ऐसा कुछ रहेगा, ऐसा कुछ. जैसे मान लो ऐसा कुछ आपको स्ट्रक्चर ही दे दिया. So benzyl chloride is basically the common name. यस यस, एंड क्लोरोफिनाइल मीथेन इज द आयुपैक नेम. ये सब में वैसा ही है. जैसे विनाइल क्लोराइड इज द कॉमन नेम एंड 1-chloroethene इज द आयुपैक नेम. ऊपर था अलाइल क्लोराइड, सो अलाइल क्लोराइड इज द कॉमन नेम, 3-chloropropene इज द आयुपैक नेम, वैसा. Mm. अब Okay. ये वाला देखो, इसमें मान लो यहाँ पे कुछ दे दिया, क्लोरीन लगा दिया, अंदर रिंग दे दिया.
तो इसका कॉमन और आयुपैक नेम सेम है, सेम है। द कॉमन नेम इज द आयुपैक नेम एंड वाइस वर्सा, सो क्लोरोफेनाइल, क्लोरोबेंजीन, सिंपल। क्लोरोबेंजीन, अच्छा। हम्म, क्लोरोबेंजीन। व्हाई नॉट फिनाइल? हाँ, इसका कॉमन नेम में देना है तो और एक कॉमन नेम दे सकते हो, फिनाइल क्लोराइड बोल सकते हो आप इसको। ठीक है। अभी वो विसिनल जेमिनल वाला करना है, विसिनल जेमिनल। हाँ, अभी ये समझो ये, जैसे मान लो इफ दे गिव यू समथिंग लाइक दिस, विसिनल। तो विसिनल का कॉमन नेम होता है। सर, एक हम्म, मिनट। बोलो। Why can't we call this chlorocyclohexene? क्लोर साइक्लो तो अंदर Cyclo, रेजोनेंस नहीं okay, होना fine. चाहिए ना Okay, मैडम, fair. Yeah, रेजोनेंस got हो it. रहा है यहाँ पे। अभी ये देखो, इसका कॉमन नेम, विसिनल का कॉमन नेम होता है अल्किलीन डाइहलाइड। सो दो कार्बन एटम है, तो आप उसको लिखोगे इथिलीन, तीन रहेगा तो प्रोपिलीन, It is इथिलीन। vis हाँ, विसिनल, विसिनल का कॉमन नेम इज अल्किलीन डाइहलाइड। नाउ कैन यू गिव मी द आईयूपीएसी नेम फॉर दिस स्ट्रक्चर? सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, यू This is विल, what vicinal? डाइहलाइड। अभी किया ना Vicinal. थोड़ी देर पहले Yeah, क्लासिफिकेशन। yeah, yeah. वेरी Vicinal नाइस। dihalide. Yeah, 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 yeah. Got it, got ऊपर it. है ऊपर। हाँ, हाँ, हाँ. किधर गया, मेरे को तो नहीं मिल रहा है। No, बेंजाइल। I got it in my notes. It's fine. हाँ, तो नहीं हो, बट आई एम वेरी स्टबन, मेरे को मिलना Okay. चाहिए। Sorry. 1 मिनट, इधर ही किधर लिखा है, विसिनल जेमिनल लिखा था ना हमने। Dihalogen derivatives. हाँ, विनाइल अलाइल विनाइल हो गया, बेंजाइल, हाँ यहाँ पे कहीं पे लिखा है, अलाइलिक विनाइलिक, नीचे यहाँ पे डाई एलोजन, रुको, एलो अल्कीन्स लिख दिया। अरे किधर गया, ये रहा, हाँ विसिनल जेमिनल। Yeah. सो टू हेलोजन एटम्स ऑन सेम कार्बन तो जेमिनल, आजू बाजू वाले कार्बन पे मतलब Hmm. एडजेसेंट कार्बन पे रहेगा तो विसिनल बोलेंगे। Got it. ठीक है, Yeah. तो विसिनल का कॉमन नेम मैंने आपको बताया, विसिनल का कॉमन नेम अल्किलीन डाइहलाइड होता है। ओके, आयुपैक नेम क्या आएगा, 1,2 डाइक्लोरो इथेन। Wait, vicinal का common name. हाँ, अल्किलीन डाइहलाइड, सो वो हिसाब से इथिलीन डाइक्लोराइड। So vicinal is a IUPAC name. नो नो, विसिनल इज अ क्लासिफिकेशन। Okay, vicinal is a ओके, classification. विसिनल इज वन क्लासिफिकेशन, हमने किया ना, विसिनल जेमिनल, हाँ, दे बोथ आर पार्ट ऑफ डाइहेलोजन डेरिवेटिव्स। हाँ. हाँ, And अब the उसमें common name विसिनल का is कॉमन नेम है अल्किलीन डाइहलाइड। तो alkene. दो कार्बन है तो इथिलीन डाइक्लोराइड आएगा यहाँ पे। और आयोपैक नेम क्या आएगा यहाँ पे, एक मिनट. 1,2 डाइक्लोरो इथेन। ओके, वैसे ही जेमिनल अगर होगा ना, जेमिनल, तो जेमिनल का कॉमन नेम होता है अल्काइलाइडिन डाइहलाइड। अल्काइलाइडिन, तो दो कार्बन है तो क्या लिखूंगा, इथाइलाइडिन। तीन है तो प्रोपाइलाइडिन, चार है तो ब्यूटाइलाइडिन, इथाइलाइडिन डाइक्लोराइड। और आयोपैक नेम दे दो अभी, आयोपैक नेम, दो कार्बन एटम्स है, यहाँ It's पे है, two. ये 1 और ये है 2। इसका आयोपैक नेम बनता है 1,1 डाइक्लोरो, डाइक्लोरो इथेन, 1,1 डाइक्लोरो इथेन। अब गया खोपड़ी में ये, पक्का? Yeah. ओके, जिस, It's ethylidene, right? सॉरी, इथाइलाइडिन,